खुद अपने हेयर काट लिए। बहुत ही लंबे हेयर थे, मैंने काट लिए। और Hey guys, I hope you all are staying safe, staying calm and cool। और अभी मैं रेडी हो रही हूँ पार्लर जाने के लिए, किसी रीजन के लिए, मतलब कुछ मैंने कर दिया है और इसीलिए मैं जा रही हूँ पार्लर। तो देखती रहिए। और मैं पार्लर ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गई, क्योंकि आज है बिहू में ज़्यादातर दुकान बंद है। और मैं ये जब तक अपलोड दूंगी मे बी बिहू ख़त्म हो चुका होगा। मैं अपने अनइवन बालों को अभी कराऊंगी इवन। गाइस, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि मैं शैम्पू ज़्यादा नहीं कर पा रही। ठंड के वजह से साइनस का प्रॉब्लम है, साइनसाइटिस का प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने खुद अपने हेयर काट लिए। बहुत ही लंबे हेयर थे, मैंने काट लिए। और थोड़ा सा अनइवन रह गया था, तो मैं पार्लर आई थी, ठीक करवा ली। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं कलर करूं अपने हेयर को, एंड वहाँ पर नहीं था। और मैं अभी थोड़ी देर बाद किसी और पार्लर में अपने बालों को कलर करूँगी। और अभी जा रही हूँ मैं अपने मौसी के घर। कीप वॉचिंग। मैं मौसी के घर पहुंच गई, लेकिन मौसी नहीं थी। लेकिन कज़न सिस्टर है, और उसके साथ मैं बात करूँगी थोड़ी देर। चाय वाय ऑफ कोर्स पीऊँगी, और उसके बाद मैं जाऊँगी फिर से पार्लर। গরম পানি করে দিছো তাতে করো বেবি বডি ফেস বই বডি আর না ঠিক আছে।
और अभी मैं एक दूसरे पार्लर में आई हूँ ताकि मैं अपने हेयर हाईलाइट कर सकूँ। आई डोंट नो मैं कैसी लग रही हूँ, पर कुछ नया तो लग रहा है। पुराने बाल, ब्लैक हेयर देख देख के बोर हो गई थी। सो आई डोंट नो, बट स्टिल आई एम फीलिंग ग्रेट।